Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11 बॉटनी यानी हुसैन इंपॉर्टेंट्स आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरी जो है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए फॉर्म नहीं भरा, उसमें ऐड होने के लिए, तो उसको फॉर्म भरें ताकि आप लोग क्या मेरे ग्रुप में ऐड हो सकें। फिर मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि क्या है आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो हम इसके इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं बॉटनी के चैप्टर नंबर 3 दी सेल के। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल विद द सुटेबल डायग्राम। प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, राइबोसोम। Who proposed the fluid mosaic model? Explain the experiment and draw diagrams. Short question answers. What is cell fractionation? Explain. Write a note on the following: differential staining, chromatography, electrophoresis, spectrophotometry. What role does endoplasmic reticulum plays in the cell? Write the function of Golgi apparatus. Write a short note on suicide sex. Also describe its types. इसका क्वेश्चन, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर ऑफ हाउस ऑफ अ सेल? एक्सप्लेन ब्रीफली. राइट अ रोल ऑफ glycoproteins and glycolipids as cell markers. What is cytoskeleton? Define the term cyclosis. Write a short note on vacuoles. Define plastids with its type and existence in different parts of the plant. How centroid is important in cell division. What is chromosome? Explain its type. Describe the structure of nucleus. Distinguish between prototype and prokaryotic and eukaryotic cell wall and cell membrane. Glyoxysomes and perioxysomes. ये ज़रा थोड़ी सी मेरी स्पेलिंग आगे पीछे हो रही, क्योंकि मुझे बायो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने जो है कंप्यूटर साइंस ली थी, वो मैथ्स इंजीनियरिंग ली थी। तो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ी सी ज़रा माजरत करता हूँ, क्योंकि वो ये नाम मैं काफ़ी टाइम के बाद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? बायो एनर्जेटिक्स। तो इसके क्या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन फोटोसिंथेसिस। डिस्क्राइब द रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिस्क्राइब इन प्रोसेस describe in detail the process of glycolysis of Krebs cycle. Define photosynthesis. Describe the fixation of CO2 during photosynthesis, dark reaction. Or what do you mean by the energy flow in ecosystem? What is the role of the flow? What is the role of this flow in this living world? Explain in detail the light dependence reaction. Describe the describe the Kelvin cycle with diagram. Explain aerobic and anaerobic respiration with equations. फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. व्हाट write a photosynthesis reactants and productant in an equation. Explain the reaction. Define the following: phosphorylation, oxidative phosphorylation, substrate level phosphorylation. Or what are chloroplasts? How they are important in chemosis. Describe all the photosynthetic pigments. Explain the role of light in photosynthesis. Explain photo respiration. Mention the importance of light in the process of photosynthesis. फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, वेराइटी ऑफ लाइट। लॉन्ग क्वेश्चन इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस. Describe the life cell of bacteria age virus, and also explain lytic and lysogenic cycle. Short question answer देखिए. Draw the lytic cycle of bacteriophage. Draw the diagram of bacteriophage virus. Briefly explain the life cycle of bacteriophage. Define mosaic virus. What are prions and pyrons and viroids. What is binomial nomenclature? Explain with example. फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे. उसका क्या नाम है? प्रोकैरियोटिक्स. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. डिस्क्राइब केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया. फिर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द साइलेंट सेलिएंट फीचर्स ऑफ
Canobacteria. Describe the different types of nutrition in bacteria. Differentiate between aerobic and anaerobic respiration. What do you mean by human flora? Draw the label diagram of bacterium. Classify bacteria on the basis of forms, shapes. How endosphere formation occur in bacteria. Describe the process of growth in bacteria. Write a note on economic importance of bacteria. What are the physical factors to control bacteria? Write a note on reproduction in bacteria. Who proposed the germ theory and what was it about? What chemical methods are used to control harmful bacteria? What right ecological importance of bacteria? Explain different bacterial diseases in men. What are cyanobacteria economical importance? चैप्टर अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे. उसका क्या टाइटल है? प्रोटोटिक्स एंड फंजाई, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन यूल्वा. आल्सो एक्सप्लेन अल्टरेशन एंड ऑफ जनरेशन. What are plants like? Protocastics, protocastics. Explain with the example and diagram where necessary. ठीक है. फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. ब्रीफली एनालाइज द डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई. शॉर्ट आंसर. डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन ऑफ उल्वा. ड्रॉ ओनली द ड्रामेटिक लाइफ साइकिल ऑफ उल्वा. नो डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, इसे आपको उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी. ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ उल्वा. ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ यूग्लेना. फिर हम इसके दूसरा. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्लाइम मोल्ड्स. what write a note on ओमाइकोट्स. what are pythothora infestants. Draw life cycle of late blade of potato. Draw life cycle of mocha. Describe the body of fungus. Write the classification of fungi according to nutrition. Write a short note on mycorrhiza and lichen. स्पेलिंग्स के लिए थोड़ी माजरत क्योंकि मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल. ठीक है. फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे. डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ fertilization in an angiospermic plant. What changes occur in the ovule after fertilization? Describe the life cycle of fern. Illustrate your answer with reference to alternation of generation. Define alternation of generation. Briefly describe briefly the life cycle of angiosperm and saligina. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस कर लेते हैं. एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बायोफेटे. एक्सप्लेन द सब डिवीजन ऑफ क्लास ट्राइचोफाइटा विद एग्जांपल्स. हाउ प्लांट्स एडाप्टेड लैंड हैबिटेट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ लीफ. एवोल्यूशन ऑफ लीफ. वेस्कुलर प्लांट्स आर सक्सेसफुल लैंड प्लांट. एक्सप्लेन. डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ सीड्स. पहले है लीव है फिर सीड्स. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंडियंटम maiden hair fern. Also draw diagram. Write down general characteristic of gymnosperm. Explain the phenomena of double fertilization. Differentiate between biophytes and trichophytes. Angiosperm and gymnosperm. Monocytolidon and dicytolidon. Lysophyta and Sanophida. स्पेलिंग थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो रही है, उसको मैं भी करेक्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं. डिफाइन द टर्म्स हेट्रोस्पोरी एंड हेट्रोगैमी. ड्रॉ एन आउटलाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे. Why do we say that Spirophyte and of Anthrocetus shows many advanced characteristics suitable for land environment? Describe the structure of T.S of Marcantia talus. Draw a label diagram of gametophyte fund. Define inflorescence. Explain Resamosan and Samosan inflorescence with its types. ठीक है. फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ. चैप्टर नंबर 10 के फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स. ठीक है. फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं. से डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रंस एंड द डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स. हाउ डज द प्रेशर flow hypothesis. Explain in the movement of sugar.
थ्रू आउट द प्लांट, इलिस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डिस्क्राइब एसेंट ऑफ सेप, डिस्क्राइब इट मैकेनिज्म, डिस्क्राइब इन डिटेल the adaptation made by the plants in order to survive during drought condition. What are the phytomones? Name them and explain the role of them in each of them in detail. Explain briefly explain paratonic movement in plant. Short question आते हैं, इसके हम डिस्कस कर लेते हैं. Write down the role of some micronutrients. What are the method of nutrition in plants? Describe how nutrition take place in insectivorous plants. What is autotrophs? What is photorespiration? Also write its consequences. Briefly describe how gases exchange in plant take place. Explain the pathways available for water to enter xylem. Write a short note on the following. Source in sync movement, plasmolysis and deplasmolysis, hydrophates, mesophates, halophates. Differentiate between osmosis and diffusion. How plants survive during low and high temperature. What is annual ring? Explain. Describe various processes involved in uptake of water and minerals in plant. Write a note on vessels and tricylates. Explain. Define vascular tissues and only name elements of xylem and phloem. Explain the pressure flow theory. Describe 3 types of transpiration depending upon the route of escape of water minerals from aerial parts of plant. Briefly define root pressure theory. Write the note on and photoperiodism. Run down the role of phytochrome in photoperiodism. Write down the note on the following. Parenchyma, parenchyma, कॉलिन साइमा, ये मुझे स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, आप लोग इसको देख लीजिएगा. ठीक है, तो मैंने क्या है बायोलॉजी बॉटनी के तमाम इंपॉर्टेंट आप लोगों से शेयर कर दिए हैं. जो जगह स्पेलिंग्स थोड़ी सी मेरी अप डाउन हुई उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे इसके इंपॉर्टेंट मिले तो मैंने कहा वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ अपने स्टूडेंट से. ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे. और अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म नहीं भरा तो उसको फिल कीजिए, मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि क्या है मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट्स प्रोवाइड कर सकूँ. ग्रुप में ऐड होने की मिनिमम फीस है, मैं बता देता हूँ 400 से भी मैंने लेस रखी है, ताकि क्या है आप लोग कम पे करके आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेनिफिट प्रोवाइड कर सकूँ. ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या कमेंट सेक्शन में जाकर कंफ्यूजन मुझे कमेंट कर सकते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट के साथ. बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. Behind closed doors, I'm a fool for your love.